Ringler Yaşası permettin bit. Şadacıt. Sabit अनिश्चित है कि हाजिर खिदमत। 15वीं शताब्दी का युग कश्मीर की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इस्लामी दौर कश्मीर में आ चुका था, पर यह दौर था ज़ैनुल आबदीन का। राजतरंगिणी में इमोशनल होकर इन्हें देवों का अवतार ज़ैन राजा भी कहा गया। जहां 14वीं शताब्दी में उनके पिता को मंदिरों को तोड़ने वाला सिकंदर बुतशिकन कहा गया, वहीं उनके पुत्र को हिंदू और मुसलमान दोनों के मन का राजा होने की वजह से बादशाह का खिताब दिया गया। जब ज़ैन राजा ने कश्मीर में सेकुलर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, तब अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था। इसी दौर की एक लोक कथा बयां करती है कि उस जमाने में हिंदू और मुसलमान के आपसी रिश्ते को किस तरह सुधारने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि ज़ैना का बेटा एक अय्याश किस्म का आदमी था। राजकुमार का फेवरेट गेम जहलम के किनारे लड़कियां छेड़ना था। वो लड़कियों की मटकियां फोड़ा करता था, जो कि वहां पानी भरने के लिए आया करती थी। Now, Yarbal or the Ghat were the place where Pandits of Srinagar mostly used to live even up till 1990. So the story goes that one day this prince noticed a beautiful Pandit woman carrying a water pot. Prince threw a pebble at her and broke her pot. He then tried to grab her. The woman ran away to her house. He followed her and tried to molest her. The woman tried to reason with the prince. The prince slapped her. This woman, in her anger, reminds him that she is a pious Brahmin woman, a sati faithful to her husband. She puts a curse on him. She tells him that he would lose his eyesight and she would be the only one who can cure him. The prince laughs it off and goes away. Later, the prince actually loses his eyesight. King Zainab tries to get him cured but is not successful. The prince finally tells him about what happened with the Pandit woman. The king asks him to apologize to the woman. The prince goes and asks for forgiveness. The Pandit woman burns a little cotton that she had spun and applies it to the eyes of the prince. The prince regains his eyesight. In his delight, he calls this woman sister. The woman accepts the title. She becomes a Hindu woman who has a Muslim brother, an example to be recounted for centuries. सारी दुनिया में अपनी जगह यहाँ पे हम है राजकुमार राजकुमार तेरे बिना रहा न If the fighting spreads to बिजली से भी प्रचंड और विनाशकारी सती शक्ति होती है मूर्ख, तुझे भस्म कर देगी। अभिमान न कर तू, दुरात्मा, तेरे स्पर्श से मैं अपवित्र हो गई। नहीं, चल मेरे साथ सारे भोग विलास का अनुभव करके तन मन मेरा प्रसन्न कर दे। नीच, वर पाकर घमंड में विनाशकारी शक्तियों का दास बन गया तू, मर्यादा ही भूल बैठा तू। ஆதியில் தேவியை நான் உனக்கு கொடுக்கும் காலத்தில் சொன்ன வார்த்தைகளை மறந்து அவளை அலட்சியப்படுத்தியதோடு அழிக்கவும் முயன்றதால் உன் சக்தி முற்றிலும் இழக்கக் கடவாய்। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के पश्चात तू किसी और का अपमान करने के योग्य ही नहीं रह जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें श्राप मेरी आंखों के सामने अंधेरा कैसा?
कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई खता नहीं है लेकिन मल्लाह की गलती नाव के सारे मुसाफिरों को ले डूबती है नायक अधर्मी दुराचारी वामाचारी भ्रष्टाचारी बहुत सॉरी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे Englishman Godfrey Thomas Vignay, who visited Kashmir in around 1835, was told this story in Kashmir. But in his story, the prince used arrows to hit the pitcher. In his story, woman's father was a great yogi who, in the end, cured the prince. There are many versions of this story prevalent in Kashmir. Some of them are in written form. In the textual sources of this story, Badshah goes to the Brahmin and he seeks their forgiveness and asks for curing the prince. However, in the oral versions of this story, we find that when Zaina comes to know that his son has been blinded by Brahmin, he becomes angry. He persecutes the Brahmins. He gets them to eat cold food and forces them to learn Persian. In the text version, it is said the persecution was by Muslim ulema or the religious heads. In oral versions, Pandits started leaving Kashmir till only 11 families of Pandits was left. Then Badshah falls sick due to bad karma, and on his deathbed, Badshah seeks apology. He dies, and at the same time, the yogi also dies, and it is said his soul enters the body of Badshah. This is like the end of intolerant Muslim Badshah and born again Hindu Badshah. And it's like a tolerant version of Zaina comes alive and lays the foundation of modern mixed religion Kashmiri society. शहजादे जाओ बहन की आजादी का ये झंडा तुम अपने हाथों से बुलंद करो बहुत खूब तुम ले आना परवरदिगार इस झंडे को हमेशा इसी शान से बुलंद रखना मुन्ना मुझे अपनी शक्ति दो मुन्ना